Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. President, Prime Minister and Uttar Pradesh Chief Minister expressed condolences over the tragic incident at Mahakumbh. 30 people dead, 60 injured at Sangam Ghat. UP government orders judicial inquiry. Over 7 crore people take the holy dip at the Triveni Sangam in Prayagraj on the occasion of Mauni Amavasya. Government approves National Critical Minerals Mission with an outlay of more than 34,000 crore rupees. Sets new price for ethanol procurement from sugarcane feedstock. 76th Republic Day celebrations conclude with melodious beating the retreat ceremony at Vijay Chowk in New Delhi this evening. And in chess, world champion D. Gukesh tops the leaderboard after 9 rounds at Wiekanzi, Netherlands. 10th round underway. And now the news in detail. At least 30 people lost their lives and 60 others were injured in the incident that took place at the Sangam Ghat in Mahakumbh, Prayagraj today. Addressing a press conference, DIG Kumbh Mela, Vaibhav Krishna said the incident occurred between 1 and 2 a.m. when a huge crowd gathered on the Akhada route and the barricades were broken. He added that the administration quickly enforced the rescue operation after the incident, created a green corridor for ambulances and transported the injured to hospitals. महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स फांदकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। President Draupadi Murmu has said that the stampede incident at Mahakumbh is extremely sad. In a social media post, the president expressed condolences to the families of the devotees who have lost their lives. She prayed for the speedy recovery of the injured. Prime Minister Modi also expressed condolences to the families of the people who have lost their lives in the painful accident which occurred in the Mahakumbh. मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered a judicial inquiry into the incident. Talking to media, Mr. Adityanath said that the 3-member Judicial Commission will look into the entire matter and submit its report to the state government. He also announced financial assistance of 25 lakh rupees each to the families of the deceased who have lost their lives in the incident. रूटीन और मेला स्पेशल को मिलाकर के लगभग 300 से अधिक ट्रेन रेलवे के द्वारा अब तक चलाई जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी 8000 से अधिक बसें श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाया हुआ है। दिन भर स्मूथली बहुत ही सुगमता के साथ पूरा स्नान इसके बाद हुआ है, जिसमें पूज्य शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, वरिष्ठ संतजन और सभी अखाड़ों ने इसमें पूरा सहयोग भी किया। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे। Meanwhile, saints and seers of different akhadas today took the Amrit Snan at Triveni Sangam on the occasion of Mauni Amavasya. Flower petals were showered on the saints and seers. Our correspondent reports that devotees are still taking the holy dip in the Triveni Sangam.
More than 7 crore devotees have taken holy dip in Sangam so far on the occasion of Mauni Amavasya. After the holy dip, devotees performed rituals and offered prayer at the ghats. Lakh of devotees are still coming to take holy dip in the Sangam. The Mahakumbh Mela, recognized as the world's largest religious gathering, commenced on 13th January and more than 26 crore devotees have taken holy dip so far. The security has been increased after the unfortunate incident took place at Sangam Ghat. Rapid Action Force has been deployed in the Mela area. The security forces is keeping a close eye and strict vigilance through CCTV and drones. With Dipendra Kumar, Aman Yadav, Akashvani News, Prayagraj. The government has approved the National Critical Mineral Mission with an outlay of more than 34,000 crore rupees. The decision has been taken to build a resilient value chain for critical mineral resources essential for promoting green technologies. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav highlighted the importance of critical minerals for the development of the economy. आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन इसको आज अप्रूवल दिया है। क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए जरूरी है कि आज हमारी एंटायर इकोनॉमी में एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी है, सोलर पार्क हो, विंड टर्बाइन हो, बैटरीज हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, मोटर्स हो, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स एक निहायती तौर पे लगे। हमारी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज जो आज ग्रो हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग बहुत होता है। The government has also approved the price for ethanol procurement from sugarcane feedstock. एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो कि सी हेवी मोलासिस CHM यानी शुगर केन की जो डिफरेंट प्रोसेस के लेवल्स हैं, उन सब में CHM का उपयोग हो, उसके हिसाब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। हम सब जानते हैं कि एथेनॉल के उपयोग से देश में इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक बेनिफिट हुआ है, किसानों के लिए भी फायदे में है, फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है और एनवायरमेंट को भी लाभ होता है। किसानों को केवल पिछले ही जो एथेनॉल सप्लाई ईयर यानी अक्टूबर तक सप्लाई होती है एथेनॉल की, उस ESY में 40,000 करोड़ रुपए का पिछले साल बेनिफिट हुआ है। A grand beating the retreat ceremony was held at the historic Vijay Chowk in New Delhi this evening, marking the culmination of the 76th Republic Day celebrations. Synchronized performances by the armed and central police forces bands mesmerized the crowd with their melodious tunes. President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh and other union ministers witnessed this captivating performance. Our correspondent reports that the music bands played a total of 30 captivating tunes in front of the audience. The Vijay Chowk today came alive with the enthralling performances of the Indian Army, Navy, Air Force and the Central Armed Police Forces bands. The beating retreat ceremony began with the iconic Kadam Kadam Badhaye Ja tune. And later, Amar Bharati, Indradhanush, Jai Janam Bhoomi and Veer Siachen played by the Pipes and Drums Band, which captivated the audiences. The Central Armed Police Forces bands performed Vijay Bharat, Ae Watan Tere Liye and Bharat Ke Jawan. Band of the Indian Air Force played Galaxy Rider, Stride, Rubaru and Millennium Flight Fantasy tunes. The Indian Navy Band played Rashtriya Pratham, Nishak Nishpad, Atmanirbhar Bharat, Spread the Light of Freedom, Rhythm of the Reef and Jai Bharti. Besides, the Indian Army Band played Veer Saput, Taakat Watan, Mera Yuva Bharat, Dhruv and Faulad Ka Jigar, which filled the audiences with a patriotic fervor. The event came to a close with the ever popular tune of Sare Jahan Se Acha played by the Buglers. With Anupam Mishra, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi. Uttar Pradesh's tableau, based on the theme Mahakumbh 2025, Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas, has won the Best Tableau Award at the Republic Day Parade held on the 26th of January at Kartavya Path in New Delhi. Meanwhile, Tripura's Eternal Reverence, the worship of 14 deities in Tripura, Kharchi Puja, themed tableau was adjudged the second position, and Andhra Pradesh tableau depicting Etikopakka Bommalu eco-friendly wooden toys won the third prize.
This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi today came down heavily on the Aam Aadmi Party, accusing it of spreading lies and making false promises to the residents of Delhi. He said Delhi's problems remain the same as both the Congress and the AAP did nothing for the development of Delhi in their tenure. Addressing a public meeting in Yamuna Khadar in northeast Delhi today, Mr. Modi hit out at Aam Aadmi Party, accusing it of being involved in corruption. आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे, आज कह रहे हैं और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। Addressing an election rally in Bhavana area, Congress leader Rahul Gandhi also accused the AAP and BJP of making false promises. He alleged that former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is opposed to reservations and is against Dalits, backwards, minorities and the poor. भाई और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और संविधान। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान में सब लोग एक समान हैं, हर धर्म की, हर जात की, हर भाषा की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। On the other hand, addressing a public gathering in Badli Assembly area, AAP National Convener Arvind Kejriwal highlighted the works done by his government. He promised that water bills will be waived off by his party if they come to power. पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कम से कम 5,000 रुपए का बिल आता है हर एक का। आप यहाँ पे इतने सारे लोग आज मेरे भाई बहन आ रखे हैं। आप में से कई लोग उत्तर प्रदेश के होंगे, कई लोग हरियाणा के होंगे, कई लोग राजस्थान के होंगे, बिहार के होंगे। अपने घर में फोन करके पूछ लेना कितने का बिजली का बिल आता है। 3,000, 4,000, 5,000। दिल्ली में फ्री बिजली है। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Budget on 1st of February. People are expecting that this budget will see improvements and incentives in various sectors, as well as boosting the economy and providing relief to the public. To know everyone's expectations before the budget, Akashvani News talked to a cross-section of people in different areas. A farmer, Jaswant Singh, says, सरकार जो बजट पेश करने को जा रही है, हमें उम्मीद है इसमें सरकार कृषि यंत्र हैं उन पर सब्सिडी और ज्यादा बढ़ाए और इससे ऊपर से जीएसटी जो लगी हुई है वो हटा दे और जो किसान सम्मान निधि है उसको सरकार बढ़ाए ताकि किसान को बुआरे के टाइम किसी प्रकार की दिक्कत न आए और खाद बीज में पूरी सब्सिडी दी जाए ताकि किसान और खुशहाल हो सके। While women have expressed hope that kitchen items like flour, pulses, etc. would be made cheaper. The Joint Committee of Parliament on the Waqf Amendment Bill 2024 adopted its draft report today. Talking to media in New Delhi, Chairman of the 31-member panel, Jagdambika Pal, said the committee has adopted amendments on 14 clauses related to the bill. In Tata Steel Chess Masters, the 10th round match between D. Gukesh and Dutch Grandmaster Max Warmerdam is currently underway at Wiekanzi in the Netherlands. Ramesh Babu Pragyananda is also up against Russian GM Vladimir Fedosiev. In his first tournament since winning the World Chess Championship, D. Gukesh has taken the sole lead after the 9th round. The 38th National Games 2025 witnessed an action-packed day with Karnataka making a spectacular start. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President, Prime Minister and UP Chief Minister expressed condolences over the tragic incident at Mahakumbh. 30 people dead, 60 injured at Sangam Ghat. UP government orders judicial inquiry. Over 7 crore people take the holy dip at Triveni Sangam so far. Government approves National Critical Minerals Mission with an outlay of more than 34,000 crore rupees. And in chess, world champion D. Gukesh tops the leaderboard after 9 rounds at Wiekanzi in the Netherlands, 10th round underway. That's all in the news at 9. Good night.